Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar. नमस्कार। मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक तथा शेयर बाजार के ताजा समाचार लेकर के आए हैं। हम उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ गोपाल कृष्ण अग्रवाल को। गोपाल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है रंगाभाष्यम। The top stories. Domestic stock indices witnessed gains of more than 0.5%. Sensex closes above 60,900 points, while Nifty settles above 18,100 level. Silver climbs to 70,000 rupees per kilogram mark for March contracts at the MCX. And Brent crude hit a 3-week high at $84.50 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में 0.5% से अधिक की बढ़त। सेंसेक्स 60,900 से अधिक और निफ्टी 18,100 अंक के स्तर से ऊपर जाकर हुआ बंद। चांदी मार्च के वायदा कारोबार में मजबूत होकर 70,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 3 सप्ताह के उच्चतम स्तर $84.50 प्रति बैरल। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की नजर डालते हैं सेंसेक्स पर। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स और निफ्टी में 0.5% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 60,900 से अधिक और निफ्टी 18,100 अंक के स्तर से ऊपर आकर हुआ बंद। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 361 अंक यानी कि 0.60% चढ़कर 60,927 पर पहुंच गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 118 अंक यानी कि 0.65% की बढ़त दर्ज करता हुआ 18,132 पर बंद हुआ। विस्तृत बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.78% के लाभ में रहा और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.46% की वृद्धि देखी गई। Well, as Nikhil just mentioned, it was a sunny day at Dalal Street today. The Sensex and the NSE Nifty today posted gains of more than 0.5%. Index of top 30 companies at the Bombay Stock Exchange, Sensex, ended above the 60,900 level. The Nifty index of top 50 companies at the National Stock Exchange closed above 18,100. Both indices added amid positive cues from global share markets. The Sensex climbed 361 points or 0.60% to settle at 60,927. The Nifty also rose 118 points or 0.65% to close at 18,132. In the broader market at the BSE, the mid-cap index climbed 0.78% and the small cap index surged 1.46%. In the Sensex pack, 25 companies posted gains while 5 logged losses. Tata Steel was the top gainer as it added almost 6%, followed by Tata Motors, which gained 2.4%. Larsen & Toubro added 1.7%. On the other hand, Hindustan Unilever declined 1%, Nestle India fell 0.6% and ITC slipped 0.5%. In sectoral indices at the BSE, all sectors logged gains except FMCG, which slipped 0.2%. Metal sector climbed 4.6%. Commodities index gained 2.3% and telecom sector rose 1.5%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,539 companies gained while just 971 fell. Shares of 121 companies, however, remained unchanged. And we welcome our senior economist and expert, Shri Gopal Krishna Agrawal ji. Agrawal ji, a warm welcome to Market Mantra.
Thank you very much, and my good wishes to all of your listeners. And to talk about today's market action, more than 360 points up as far as the Sensex is concerned, and almost 120 points up for the Nifty, second consecutive day. Despite the turmoil and uncertainty and all the issues, there is some kind of a sense of stability in the market. What would you say, Mr. Agarwal? The thing is that the global outlook for India is very positive. If you look into the certain reports like Foxconn and other companies, which had a huge manufacturing base in China, they have planning to shift their manufacturing to India. And with the states like Uttar Pradesh and other states going for a competitive federalism and attracting huge investment in their states, with UP now in February they are holding investor summit and expect a 15 lakh crore investment into Uttar Pradesh alone. So this shows that there is a big confidence level among the global investors about India. And same is reflected in our stock markets also. And all the major three economies which were driving global economies, whether it is US, which is feeling the pressure of huge inflation of almost higher, for 40 years it is seeing highest inflation. Europe is feeling the pinch about the gas prices, energy crisis. They are also in a difficult time, particularly UK and other Germany, etc. And even China is facing such a huge problem. So India is a bright spot. The global investors and manufacturing sector industries across all segments are looking towards India to invest. They are investing in chip manufacturing, in pharmaceuticals, in automobile industries, and the government scheme of PLI has also benefited global investment into India. Defense sector is opening up. All these together are giving the confidence, and the market is showing that confidence in its current buoyancy. गोपाल जी, अगर हम पूरे एक साल की बात करते हैं, खासतौर पे अगर हम इस साल शुरुआत में जनवरी की बात करें और हम साल के अंतिम सप्ताह में चल रहे हैं, तो कारोबार की दृष्टि से देखा जाए तो सेंसेक्स कहां जनवरी में था और कहां अभी हम 60,000 के ऊपर भी आ चुके हैं, 61,000 को भी हमने छुआ है। एक ऐसी स्थिति जो हमें ये दर्शाती है कि सिर्फ बाहर का निवेशक ही नहीं, जो अपने देश का निवेशक है उसका भी पूरा भरोसा मार्केट पर बना हुआ है। उसने पैसे निकालने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम पैसा पूरी तरह से निकाल लें। हर निवेशक ये सोचता है कि मार्केट तो हमारा मजबूत है, हम इसमें पैसा लगाते ही रहें। आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, अगर हम पिछले महीने की फिगर देखें तो FIIs ने लगभग 9,000 करोड़ का सेलिंग की थी और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने लगभग 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, इवन कई लोग सोचते थे कि जो हमारा मार्केट है वो FII ड्रिवन केवल है, ऐसा नहीं है। जो आप बात करें कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, प्राइवेट इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर, आज 10 करोड़ से ऊपर निवेशक भारत में NSDL के पास अकाउंट खोल के काम कर रहे हैं मार्केट में। तो एक ग्लोबल एक पूरा कैपिटल मार्केट में सेबी के कारण, एक रेगुलेटेड मार्केट में इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सिस्टम के कारण, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के कारण डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी मार्केट में अपना पैसा लगाने के लिए आ रहा है। तो केवल FII ड्रिवन मार्केट नहीं है, ये आप बिल्कुल सही बात करें कि हमारा डोमेस्टिक मार्केट अब इतना डेप्थ और वाइब्रेंट हो गया है कि हम लोग अपने हिसाब से फ्यूचर को एस्टिमेट करते हुए हमारे मार्केट्स चलते हैं जी। साथ में जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स और जो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टर्स हैं न्यू प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं, उस सब के कारण भी एक बायंसी मार्केट में सेंटिमेंटली परसेप्शन वाइज आती है। तो उन सबका एक बैरोमीटर है। जो कैपिटल मार्केट है एक फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन को डिस्काउंट करता है, तो वह अपने आप में दिखाता है कि यह जो 60,000 से ऊपर का सेंसेक्स हो गया और 18,000
से ऊपर का जो निफ्टी का लेवल है, वो अपने आप में बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट लोगों की इंडियन इकोनॉमी और ओवरऑल इंडियन मार्केट सेंटिमेंट को दर्शाता है। गोपाल जी, एक इसी से जुड़ी बात आपसे और पूछना चाहूंगा। एक वो दौर था जब सेंसेक्स अगर 400 से 500 अंक नीचे गिर जाता था तो हाहाकार सा मच जाता था और अगले दिन अखबारों की बड़ी सुर्खियां बनता था, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि सेंसेक्स 900 अंक नीचे गिर जाता है और 4 दिन में मार्केट को इतना कवर कर लेता है कि निवेशक फायदे में आ जाते हैं। तो ये किस तरह की चीजों को दर्शाता है, खासतौर पर जब भारतीय निवेशक के नजरिए से अगर हम देखें तो? देखिए, एक तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे काफी वाइब्रेंट होके डेवलप हुई है और स्मॉल इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के थ्रू इन्वेस्ट करने से बहुत ज्यादा सहूलियत होती है। तो यह अपने आप में एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी है और सेफ्टी नेट भी उनके लिए साथ में मिलता है जी। डायरेक्ट मार्केट के फ्लक्चुएशंस के ऊपर से इफेक्ट करके पैनिक की तरह कभी एक्शन नहीं ले इन्वेस्टर। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत मैच्योर हो गई है। हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी बहुत मैच्योरिटी के हिसाब से काम करते हैं और मार्केट में एक डेप्थ भी क्रिएट हुई है। आज आप देखिए मिड कैप और जो स्मॉल कैप है जी, उनमें बढ़त दर्ज हुई, उनमें अच्छी बढ़त आई है। पीएसयूज में भी बढ़त आई है। पीएसयू बैंक्स हमारे आप देखेंगे पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यूअसली हमारा बैंक का जो पीएसयू बैंक्स हैं उनकी में बढ़त अच्छी आ रही है, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी दिख रही है। तो इक्विटी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, ये सब चीजें जो है, बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा इस चीज को डिटरमाइन करता है कि ये किस तरह का हमारा फाइनेंशियल मार्केट में स्ट्रेंथ है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, सेबी और जो रेगुलेटर्स हैं वो काफी एक्टिवली चीजों को इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड के काम के ऊपर जागरूकता से काम कर रहे हैं। में एक तरीके से ट्रांसपेरेंस रूप से एक डेप्थ भी क्रिएट हुई है, तो इन्वेस्टर्स उसका फायदा उठा रहे हैं। और अल्टीमेटली जब इकोनॉमी ग्रोथ की होती है और मिडिल क्लास इंडिया में इतनी ज्यादा है, उसके पास स्पेयर फंड्स भी आते हैं तो वह इन्वेस्ट भी करती है। इसी कारण से हमारे डिपॉजिटरी अकाउंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो यह सारी चीजें मिलके हमारे कैपिटल मार्केट को स्ट्रेंथ प्रदान कर रही है और उसके कारण ही जो पैनिक सिचुएशन आप बता रहे थे 300-400 पॉइंट का एकदम पैनिक क्रिएट हो जाता था, क्योंकि ट्रांसपेरेंट तरीके से पहले कभी कभी सिस्टम्स में लोगों को डर रहता था, लेकिन अब एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है। डेली इन्वेस्टमेंट फिगर्स आ जाती है मार्केट में, गेनर्स लूजर्स सब आ जाते हैं, वॉल्यूम आ जाता है और फिर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कैपिटल मार्केट में बढ़ गया है। Yeah, and Mr. Agarwal, we are talking about the stability and the sense of security in the markets. Let me also bring in this point of political stability and ideology. You know, in the last 8 years or more than 8 years, we have seen that probably investors have loved this. As they say, you know, the stock markets don't like uncertainty. And in the last 8 years, probably, you know, not only the domestic investors, but also the international investors have an inkling of the kind of ideology and the policies which will be there and the continuity. So that stability also matters a lot. Yes, market, the investment, private capital formation comes by two issues. One is that there is a demand in the economy, and India has a huge population, so there is a good demand in through the domestic market in the economy. Second is the stability, consistency in the policies of the government. You see in this session, almost there was on the account of ease of doing business, the government abolished many of the criminalization clauses in the ease of doing business. They streamlined many of the bills which were creating harassment to the investors. Then there are initiatives like online GST return filing, virtual income tax assessment, etc. So these have created ease of doing business at one point of time, reduce the harassment component which sometimes industrialists, etc. feel, and there is the investment by the government also. So all these components together with the political stability,
there is a consistency, and political stability is one of the important factor globally. Countries which have political stable government, they attract investment, and India has seen a strong leadership. And this year, if you look into that, we have got the presidency of G20, which is a big economic forum globally. 85% of the global population, more than 60% of the global population belongs to G20 countries. 85% of the GDP is belonging to these 20 countries, and then 75% of the global trade is within these 20 countries. So India case our whole culture, tradition, market, our various manufacturing facilities, etc., to the global leader. That will also help in the economic positive perspective about India. So stability is an important factor which attracts global investment, and India at present has a strong leadership which has a pro-business attitude and are looking toward easing down of ease of doing business, creating good infrastructure, changes in the law, economic reforms. All these are contributing. Mr. Agarwal, yesterday the CEBR report came out. It was kind of a mixed bag for the entire world almost. It painted a kind of a gloomy picture with slowdown and recession in the year 2023, which is just a couple of days ahead of us. But as far as India is concerned, it said that by the year 2035, India would become the third largest economy in the world with a $10 trillion economy. So isn't that commendable, a kind of a big relief for India? If you look into global report, whether it is World Bank report, IMF report, or the report which you are mentioning, CEBR report, you will see that they are pointing to one thing, that India is an outlier in a face of extreme inflation and recession globally. India's inflation is under control. RBI has been successful to bring down the inflation to the targeted level around 6%, which is a very big achievement post-COVID, where the global economies are facing huge recession because of post-COVID policies followed, and the difference of post-COVID policies followed in India, that inflation is under control, one thing. Second thing is the GDP growth rate. Everybody is in their expectation, even RBI, Ministry of Finance and global institutions, they are saying that India's GDP growth rate will be consistent around 7%. So combining these both two aspects, India's GDP is India's economic growth is an outlier, one thing, and second, at present we are the fifth largest economy and we are about $3 billion economy. And Germany is only 3.7, which is not far off from us, and we will definitely cross Germany's GDP. Even Japan is $4.2 trillion, which we also will cross. So therefore, there is no confusion about the issue, that there is no doubt about that issue, that India will be in a recent past, in around a decade, we will be third largest economy. Recently we crossed UK, displaced it from its position and became the fifth largest. If our GDP growth rate, which we are expecting more than 7%, therefore we will definitely be the third largest economy. And one thing is also to be considered, that once there is a positive sentiment about any country, it catalyzes further investment. So it has a catalytic effect. Positive sentiment brings more investment brings more growth, and more growth brings positive. So we are in a cycle. When the Prime Minister says that it is the Amrit Kal, we are in a cycle where there is a positive economic sentiment for India.
which is being reflected in all the... On that optimistic note, it's time to take a quick break. But when we come back from the break, we'll continue our discussion with Gopal Krishna Agarwal about the macroeconomic fundamentals of the economy and much more. Well, time now for a quick break. अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम मार्केट मंत्र में एक बार फिर से। और गोपाल जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। गोपाल जी, अभी हम जिक्र कर रहे थे आरबीआई का, आप तमाम बातें बता रहे थे आरबीआई के जो उन्होंने उपाय किए हैं और सरकार जो उपाय कर रही है। ये सारी चीजें अगर हम पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ये नजर आता है कि देश में जो इन्वेस्टमेंट की जहां तक बात है और जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है और प्रोडक्शन की बात है, तीनों ही जगहों पर भारत लीड कर रहा है। हर जगह हम बढ़त देख रहे हैं। कोई भी ऐसा सेक्टर नजर नहीं आता है जहां पर हम ये कह सकें कि भारत उसमें आगे नहीं बढ़ रहा है। इन सारी चीजों को अगर इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से देखते हैं, खासतौर पर शेयर बाजार की नजर से देखते हैं या म्यूचुअल फंड की नजर से देखते हैं, तो निवेशकों को कहां तक समझ में चीजें आती हैं कि हाँ, इसमें हम पैसा लगा सकते हैं या इसमें पैसा नहीं लगा सकते हैं? देखिए, इन्वेस्टर्स को ऐसे सेक्टर को आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जहां पे ग्रोथ बहुत अच्छी एक्सपेक्टेड है। अगर इंडिया के प्रधानमंत्री जी भी जब कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को खरीदा जाए, उसके ज्यादा उसको प्रमोट किया जाए और इंडिया उन सेक्टर्स में ग्रोथ करेगा जहां पे उसकी ग्लोबल एज है। जैसे आप आईटी सेक्टर को देखें, पीछे जी 90 के दशक के बाद से जो कंटिन्यूअसली ग्रोथ हम देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि फ्यूचर में भी उसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा। आईटी, हार्ड, अब इसमें ब्लू चिप भी जुड़ रहा है। ब्लू चिप, अब ये भारत सरकार ने पिछले साल ही 90,000 करोड़ का चिप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल लिया। चिप मैन्युफैक्चरिंग एक तरीके से बॉटलनेक चैलेंज था हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, आईटी इंडस्ट्री को, और अब बहुत ग्लोबली ताइवान के ऊपर डिपेंड करते थे इस चिप के सप्लाई के लिए, और उसमें चाइना के कारण कई प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो पूरी सप्लाई चेन में डिसरप्शन आया था। इंडिया ने, सरकार ने इतना इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण डिसीजन लिया जिसके कारण हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो कि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव थी और ग्लोबल सप्लाई चेन में हम बहुत अच्छे इंटीग्रेटेड थे, उसको एक बॉटलनेक फेस कर रही थी, उसको हटाने का काम किया। तो इस तरह का जो सेगमेंटल अप्रोच है, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसमें सरकार ने बड़े इनिशिएटिव लिए हैं। उसमें पीएलआई के जैसे जिन जिन सेक्टर्स में हमने इन्वेस्टमेंट किए या जिन जिन सेक्टर में सरकार ने इंसेंटिव दिए। मोबाइल इंडस्ट्री को देखिए, कुछ साल पहले हमारे यहाँ केवल 2 मोबाइल इंडस्ट्री थी 13-14 में। आज लगभग हम मेजर ग्लोबल मोबाइल इंडस्ट्रीज, 200 से ऊपर मोबाइल इंडस्ट्रीज भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर चुके हैं। सैमसंग, एप्पल जैसे बड़े बड़े ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स आज पूरा मार्केट प्रोक्योर से करते हैं। अभी मैं फिगर देख रहा था, 24 दिसंबर की एयर ट्रेवल की ह्यूज फिगर्स आई हैं, पेंडेमिक से भी इतना ज्यादा। तो लोग टूरिज्म, ट्रेवल एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो बहुत तेजी से प्री पेंडेमिक से भी बहुत तेजी से आगे रिवाइव। राइट। तो टूरिज्म है, फार्मास्यूटिकल है जिसमें हम ग्लोबल प्लेयर हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, डिफेंस में हम ग्रो कर रहे हैं, फिर जो अलग इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सीमेंट। आज अगर आप देखेंगे आज मार्केट में, तो मेटल इंडस्ट्रीज ने बहुत अच्छा इंडेक्स ने बहुत हाई राइज किया है। यस, क्योंकि ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो रहा है, तो स्टील, सीमेंट आदि का सारे मेटल्स की डिमांड भी बढ़ रही है। तो इन सब चीजों का अपने आप में जो देख के करते हैं जी, आउट परफॉर्म करते हैं बिल्कुल लोग। और अब नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजारों की ओर। तो एशियाई शेयर बाजारों में आज लाभ का रुख रहा।
चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1% की वृद्धि में रहा। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.7% ऊपर आ गया, जबकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक आज 0.3% के लाभ में रहा और जापान के निक्केई सूचकांक में 0.2% की बढ़त दर्ज की गई। क्रिसमस के अवकाश के कारण हांगकांग के हिंग सेंग सूचकांक में कारोबार नहीं हुआ। यूरोपीय शेयर बाजारों की बात करें तो लंदन का FTSE 100 भी क्रिसमस के अवसर पर बंद रहा। जर्मनी का डेक्स 0.8% ऊपर आकर कारोबार कर रहा था, जबकि फ्रांस का कैक 1% बढ़त में चल रहा था। Well, let's take a look at the energy scenario. Oil today hit a 3-week high as China's latest easing of COVID-19 restrictions spurred hopes of a fuel demand recovery. The crude prices also got support from cuts in US energy production caused by winter storms. In intraday trade, Brent crude was trading at $84.50 per barrel, while WTI crude price was at $80.10 per barrel. And to talk about oil, Agarwalji, there seems to be, some kind of firmness in oil prices, especially, because of supply disruptions also. So, can we expect oil to be in this region of, $83-84 per barrel itself? Or will it move up? No, I think the oil prices are expected to further fall down because the thing is that India followed the policy of renewable energy because our dependence on oil import is a big challenge for all of us. So Prime Minister's initiative of ethanol blending, our increasing dependence upon solar energy, our initiative on the green hydrogen energy, all these initiatives will reduce our dependence on oil imports. So I think the one challenge which in our economy faces always about the oil prices will be not challenging. And it is expected that the oil prices will not go more than 90 at any point of time at any crisis till it is $89 or $90 per barrel. Our problems are not that acute. And people are expecting that it will hover around between 80 to 85. In the long term, they are expecting further fall. But slowly, government policy is that we should depend more upon renewable energy, and our dependence upon oil import has to come down. Further, we are also increasing our dependence on natural gas. Which is a much cheaper alternative to dependence upon fossil fuels, which is through LPG and CNG, other thing, connectivity. The national gas grid is being built. All these things are helping us to fight the oil challenge. बिल्कुल गोपाल जी, हम ये कह सकते हैं जिस तरह से आपने एनर्जी का जिक्र किया है तो भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो भविष्य है वो बहुत ही खूबसूरत है और सरकार इस दिशा में प्रयास भी कर रही है। अब हम सोने पर अगर नजर डालें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी के वायदा कारोबार में सोना 200 रुपए ऊपर चढ़कर 54,880 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं मार्च अनुबंध वाली चांदी भी 1,010 रुपए महंगी होकर 70,080 रुपए प्रति किलो पर थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना वृद्धि के साथ $1,818.10 प्रति औंस पर था, जबकि चांदी भी बढ़त दर्ज करती हुई $24.40 प्रति औंस पर थी। Gopal Krishna Agarwal ji, thank you so much for joining us on Market Mantra. Namaskar. It's my pleasure always. And before we close, let's take a quick look at the top stories. Domestic stock indices witnessed gains of more than 0.5%. Sensex closes above 60,900 points, while Nifty settles above 18,100 level. Silver climbs to 70,000 rupees per kilogram mark for March contracts at the MCX, and Brent crude hit a 3-week high at $84.50 per barrel. और अंत में आर्थिक सुर्खियों पर नजर एक बार फिर से। घरेलू शेयर बाजार में 0.5% से अधिक की बढ़त, सेंसेक्स 60,900 से अधिक और निफ्टी 18,100 अंक के स्तर से ऊपर जाकर हुआ बंद। चांदी मार्च के वायदा कारोबार में मजबूत होकर 70,000 रुपए प्रति किलोग्राम और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 3 सप्ताह के उच्चतम स्तर $84.50 प्रति बैरल। That's it in this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. नमस्कार।